अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ANN न्यूज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त की चंद अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेजबान वजीहा आली। नाज़रीन, खबरों का आगाज करते हैं। आगाज में बात करेंगे दफा 370 की मनसूखी के हवाले से। गुज़श्ता रोज से ही सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों पर समाअत हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, कल दिन से ही अदालत उज़्मा में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत की जा रही है। इस ज़िम्न में अदालत उज़्मा में मुतादिद अर्जियां दायर की गई हैं जो दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के फैसले को चैलेंज कर रही हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज अपने दलाइल 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच के सामने पेश किए। बेंच के सरबराही CJI DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट की कार्रवाई पर तनकीद करते हुए CJI से मुखातिब होकर बताया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बदले अपनी नुमाइंदगी आज खुद नहीं कर सकता। सिब्बल ने बताया कि आइंदा दिनों पार्लियामेंट खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करार देगा और आईन के बुनियादी ढांचे के साथ खिलवाड़ करेगा। सिब्बल ने मजीद बताया कि कानून साज असेंबली दफा 370 को मनसूख नहीं कर सकता और ये जम्मू कश्मीर के आईन में साफ जाहिर है। नाज़रीन, अब आप देखिए अदालत उज़्मा से समाअत के ये मनाज़िर। Body. Now here the proclamation comes under 356. That's right. After that, what is done then? Then, they amend section Article 3. We saw that. Yes, but kindly see, just read Article 3 with me for a minute. Formation of new states, alteration of areas, boundaries, or names of existing states. Amendment to Article 3 required as part of this whole process? Because they wanted to get rid of this proviso, Malak. Otherwise, they wouldn't have been able to. Yes. Because then you have to do the Reorganization Act. Oh, the reorganization. Yeah, that required. Converting the state into a UT. Right, that's right. That's how this had to be done earlier. Second proviso is not your lordship's document. That has been the other document. The second proviso relates to Malaj as applicable to the state of Jammu and Kashmir. Kindly have a look at that. Kindly just show that document. Document volume 1. Volume 1. Of the order passed. Yes. There the proviso is there. There the proviso was. That's correct. That proviso is deleted. That's correct. Which is that proviso? Which requires, I'm going to show that to your lordship. PDF page 65, document volume 1. That was. Yes. That must be pursuant to the presidential order. Correct, absolutely right. So the presidential order was not, was the presidential order amended? No. No. That's interesting. It has been superseded, my lord. Whole article once. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament, except on the recommendation of the President, and unless, where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or name of any of the states, the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon, which within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the President may allow, and the period so specified or allowed is expired. That's why, Malaj, when we
when the views of states was taken, well, they said, no, you haven't referred it. We said, only need to take your views. We don't have to take your consent or your concurrence. So we may not agree. Even if you express your views that it should not be done, we're not bound by, which is the correct constitutional provision. They have created a UT. Otherwise, they have not altered the territory, have they? No, they have. No. Ladakh is not part of the state anymore. That's what they carved out a UT and made another UT, which they say. They have carved out a UT saying that this will become a state, and the other UT will remain a UT. So carving out a UT is permissible, no? The boundaries are. Not from a state, I'm sorry. You can't Boundaries create are a altered. whole state. Boundaries are also. Yes, altered. boundaries are also altered. To that extent, yes. So, this is all, there is and I'm going to take your lordship through the Constitutional Assembly debates on this. Is it mentioned only in 1954 constitutional order, or is it incorporated in Article 3 also? It's mentioned in the 54 order and incorporated in Article 3 before the 54 order. If Yes. it is incorporated, Yes. that would amount to amendment of the constitution. Then was it followed as per Article 368? Not in the Indian Constitution, Mother. It's only in Article this Constitution. This proviso, second proviso, Yes, you are reading. yes. Now we are reading it on the presumption or assuming that it's a part of Article 3 of the Indian Constitution. Second proviso. No, it's a modification of Article 3. As applicable. As applicable only. So it is only incorporated in the 1954 order, As not formally inserted in Article 3 of the Indian Constitution as a second proviso. Correct. Absolutely right, what my lord is putting to me. Absolutely. They suspended the operation of They it. suspended the operation. That assembly can't exercise that power, Mother, to suspend. On behalf of the assembly. Yes, they can't do that also. A bill cannot be introduced without the consent. Assembly is not in session. There is no assembly, it has been dissolved. So where do you get the consent of the assembly? So the governor becomes the assembly, then the assembly becomes parliament, and then parliament gives consent. On behalf of an assembly that doesn't exist. Mr. Sibal, what was the procedure followed when different orders were issued under those constitution, right? Like those about 18 orders, constitution orders, Yeah. 1952 up Yes, to. all mandates with concurrence. What was the procedure followed? Procedure Was it through parliament process or through by the president only? No, it's not through a parliament process, it's through a presidential notification after taking the consent, concurrence or consultation. That's right. So that's how it's made applicable, through a presidential order. नाज़रीन, अब बात करेंगे नार्को मिलिटेंसी केस के हवाले से। मेंढर में SIA के जानिब से 2 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आज मेंढर में 2 मकामात पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक आज SIA ने पुंछ के गोरसाई और बालाकोट में छापे मारे, जिस दौरान मकीनों से पूछताछ की गई है। जराये ने बताया कि नार्को टेरर और मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में SIA ने LOC के नजदीक इलाके बालाकोट और गोरसाई में मिलिटेंट मावनीन के घरों की तलाशी ली। जराये का यह भी कहना है कि बदनाम जमाना मंशियात फरोश रफीक लाला केस की तहकीकात के दौरान खुर्शीद अहमद वल्द नजीर हुसैन का नाम सामने आया, जिसके बाद SIA ने उसके घर पर छापा डाला। SIA ने मेंढर के गोरसाई नाला इलाके में मिलिटेंटों के मुश्तबा बालाई वर्कर के घर पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस जराये ने बताया कि ये छापा खुर्शीद अहमद वल्द नजीर हुसैन की रिहाइशगाह पर मारा गया, जो मुबैना तौर पर जंगजुओं का ओवरग्राउंड वर्कर है। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमारे न्यूज डेस्क को मजीद तफसीलात का इंतजार है। नाज़रीन, इधर ट्रैफिक पुलिस के जानिब से आज ये कहा गया कि गाड़ियों के ज़ेरे इल्तिवा ई चालान 9 अगस्त तक निपटाए जाएं या कार्रवाई का सामना किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने 7,366 गाड़ियों के मालिकान को हिदायत दी है
कि वो 9 अगस्त तक अपने ज़ेरे इल्तिवा ई चालानों को निपटा दे। ऐसा न करने की सूरत में उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने अदालती हुक्म के हवाले से एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर की अदालत के जरिए 28 जुलाई 2023 को जारी करदा एक अदालती हुक्म के मुताबिक 7,366 गाड़ियों की फेहरिस्त जारी की गई है, जिनके खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा ई कोर्ट चालान दिखाए गए हैं। गाड़ियों के मालिकान को चालान 9 अगस्त 2023 तक या इससे पहले निपटाने के लिए मुतल्लिक किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मज़कूरा बाला हिदायत को मद्देनजर रखते हुए अदालत की तरफ से जारी करदा ज़ेरे इल्तिवा चालान के साथ गाड़ियों की फेहरिस्त को आम लोगों के दरमियान जारी किया जाता है, जिसमें गाड़ियों के मालिकान खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान ज़ेरे इल्तिवा दिखाए गए हैं। गाड़ियों के मालिकान को 9 अगस्त 2023 तक या इससे पहले चालान निपटाने के लिए खुसूसी मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर की अदालत में हाजिर होना होगा। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की मुताल्लिका दफात के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके नतीजे में गाड़ियों को जब्त भी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी की सिफारिश की जाएगी। नाज़रीन, अब बात करेंगे जिला इंतजामिया कुलगाम के हवाले से, जिन्होंने आज देही तरक्की और पंचायती राज के बाहमी इश्तराक से 15 रोजा स्वच्छता यानी सफाई मुहिम का आगाज अमल में लाया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिदीन ने आज भारत मिशन के तहत 15 रोजा स्वच्छता ही सेवा है सफाई मुहिम का आगाज किया। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम से इस मौके पर डीसी कुलगाम ने मुख्तलिफ ब्लॉक्स के लिए 20 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस दौरान 15 दिन की सफाई मुहिम मुख्तलिफ सरकारी इमारतों, दफातर के अहाते, पार्क्स, पंचायत घर और दीगर अवामी मकामात की सफाई की जाएगी और आगाही के अलावा सड़कों के अतराफ से कचरा हटाया जाएगा। इस दौरान सफाई की अहमियत के बारे में भी आवाम को उजागर किया जाएगा। की दैट स्वच्छ भारत अभियान जो 2 है, उसके तहत हम लोगों को टारगेट मिला है कि हमें 178 पंचायत जो हमारे और 273 विलेज है कुलगाम में उनको स्वच्छ बनाना है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडीज़ में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया इस सिस्टम को डोर टू डोर कलेक्शन का, वैसे ही हम लोगों को 178 पंचायत को स्वच्छ भारत 2 के अभियान के तहत हम लोगों को मॉडल बनाना है। इसमें 3 कैटेगरीज होती है, राइजिंग, एस्पायरिंग और मॉडल। और आपको खुशी ये जान के खुशी होगी कि इस टाइम जो पोर्टल का जो अपडेट है 150 पंचायत हमारी मॉडल हो चुकी है। और जिस तरीके से हम लोगों ने गवर्नमेंट को टारगेट दिया है कि 15 से पहले मैं कहूँगा आपको कि 9 से पहले पूरा कुलगाम की जो पंचायत है उनको मॉडल पंचायत डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें बाज़ाब्ता एक सिस्टम प्लेस किया गया है, जैसे कि सेग्रीगेशन शेड हो गया, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो गया, सिमिलरली जो यूनिट्स लगने थे। और अभी आपने देखा हम लोगों ने वहाँ 178 पंचायत के लिए ऐसी गाड़ियाँ भी खरीदी है। 22 गाड़ियाँ खरीदनी है हमें, जो कि कैरी करेंगे इस वेस्ट को टू द सेग्रीगेशन शेड्स और इनको बाज़ाब्ता प्रोसेस हो जाएगा, इस वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक 12 गाड़ियाँ हम लोगों ने आज फ्लैग ऑफ करी हुई है और मुझे लगता है आगे जाके हमारे गाँव भी साफ रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहूँ कि इस वक्त जो अगर सिचुएशन देखेंगे कुलगाम में, तो लेगेसी वेस्ट का इशू रह रहा है। आप देखेंगे कि लेगेसी वेस्ट जो है वो लोग रिवर बैंक्स पे या किसी नालों में फेंक देते हैं, तो उस पर इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। उस लेगेसी वेस्ट को साफ़ किया जा रहा है ताकि आगे जाके मॉडल पंचायत जो बने वो उसको सस्टेन कर पाए। और पंचायत लेवल पे ये सारा सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर लोकल रिसोर्स यूज़ किया जाएगा, पंचायत थ्रू यूज़र फी लिया जाएगा, जिसकी वजह से मुसलमानों, सिखों और पंडितों ने मुश्तरका तौर पर एक राबता कमेटी तश्कील दी है, जिसका नाम मटन वेलफेयर फोरम है। कमेटी का बुनियादी मकसद 3 बिरादरियों के दरमियान फिरका वाराना भाईचारे को बरकरार रखना और पूरी दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाना है। इसके साथ साथ इलाके की मजमूई समाजी व इक्तिसादी तरक्की को भी यकीनी बनाना है। नाज़रीन, इस हवाले से कमेटी में शामिल पंडित बिरादरों का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा एक ख्वाब था, बहुत पहले से एक ख्वाब था। चूँकि यहाँ हालात ख़राब हुए
90 से पहले भी हमने कोशिश की थी। तो अब ये हमने ये बेड़ा उठाया कि नहीं, यहाँ मटन डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम मिलकर बैठकर सजाद साहब ने, इंद्रजीत ने जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो हमने मिल बैठकर 2-4 मीटिंगें की। तो उसमें हमने फिर यही निचोड़ निकाला कि यहाँ पर हमें डेवलपमेंट के लिए अगर मटन का ही नहीं, सारे कश्मीर को ये मैसेज देनी है कि मटन शुरुआत करेगा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, मतलब एक हम बनाएंगे यहाँ पर फोरम, और जो डेवलपमेंट मटन की करेगा। तो इसीलिए हमने ये मतलब शुरू किया कि मटन वेलफेयर फोरम हमने बनाया। ये पैगाम तो हम दे रहे हैं, आप पहले ही देख रहे हैं। मार्टंड एक ऐसी जगह है जहाँ से हम मैसेज हर बार देते हैं, हर साल देते हैं, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर यात्री भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं, और हिंदू भी यहाँ आना शुरू हुए। जो कश्मीरी पंडित है जो यहाँ से डर कर भाग गए थे, वो अब बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब बैठे हैं, 3-3, 4-4 महीने बैठते हैं, और यहाँ से लोग मतलब कश्मीर के हर एक इलाके में जाते हैं। ये तो इससे बढ़कर क्या मैसेज होगी। और हम यही चाहते हैं कि वही पहले 90 जैसे हालात यहाँ फिर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा कायम हो रहे, और फिर यहाँ पर एक अमन का गहवारा बन जाए। This is the need of the time. You just see, we just do not want to measure the development via an economic angles. Let us see how this land is being infected by so many menaces. That we have the drug peddlers, they to have just started such what I can say worst type of a noise on the surface of the earth. We have to take care of all these things, because this mutton that has remained a seat of learning since ages. You know, the first northern university was situated nowhere else but in the northern India. So we just want to bring that very, I think, let be back to the pavilion. We just give knowledge to all people. We are the people who are taught. We just want to be the first. Let's establish such type of forms. That we are one, Hindu, Muslim and Sikh. We breathe in the same oxygen. We breathe out the same carbon dioxide. We are not different. When we are same, how we are different? Via color, creed and caste. We are one. We will just work in togetherness, hand in hand, glow in glow, toes in toes. There's a need of, I say, cooperation. We are the first to have established such type of forms. We'll do, inshallah, just like brothers, just like sincere friends. We'll just try to develop friendship, friendliners, cooperation and team separate. We'll just give a, what I can say, voice to the world that we are one, and this is a place where we are given a slogan. Let the slogan go to the sky, that this is a place where we have a concrete bond of, what I can say, integrity amongst Hindu, Muslim and Sikhs. अब देखिए जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये यहाँ के लोगों की और यहाँ के कल्चर की एक देरी ना मांग थी। मटन एक छोटा हैमलेट है, अनंतनाग से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है, 8 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन हमेशा से ही हमने देखा कि यहाँ पे हिंदू, सिख और जो मुसलमान हैं, ये आपस में एज ब्रदर्स हमेशा रहे हैं। और मटन ने, इट हैज़ already set an example with regard to the communal harmony, because mutton happens to be a place that has spread this message that we live together from centuries. और इसका आज की कोशिश की खाली एक ही गर्जो मकसद है, वो यही है कि मटन की तामीर और तरक्की के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख इकट्ठे काम करें। और जिसको लगता था कि वो यहाँ पे इनसिक्योर है, हम उनकी इनसिक्योरिटी को अब ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि हर एक सिक्योर माहौल में वो फील करे और मटन को तामीर और तरक्की के नक्शे पे ऊंचा और वुसअत देने की वो इनफरादी या इज्तिमाई कोशिश भी करे। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल की अगर बात करें तो वो मुख्तलिफ फलों और ख़ास फलों के काश्त के लिए मशहूर है। अब तरबूज के काश्त भी यहाँ शुरू कर दी गई है। नाजरीन, बागबानी और ज़राअत के शोबे जम्मू और कश्मीर के लिए मईशत के अहम ज़राए हैं, जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी फराम करते हैं। गांदरबल के बटवेना इलाके के एक किसान ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर ऑफ सीज़न में तरबूज के काश्त की। उन्होंने कहा कि वो ये काम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और उन्हें तरबूज की बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के बारे में इजाफी मालूमात फराम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद बताया, बटवेना गाँव के तरबूज तैयार हैं और जिला के आसपास इलाकों में दस्तयाब हैं। हम पिछले तकरीबन 2-3 साल से इससे वाबस्ता है, तो हमने जब देखा है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमने भी स्टार्ट कर दिया है। इसमें फ़ायदा अच्छा है, अगर इंसान मेहनत करे तो फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन मसला है, पिछले साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारे लोगों को पैसा ठीक तरह नहीं मिला है। किसी को मिला लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिला है, तो फिर भी गुजारा होता है। इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा आएगा। अगर रेट रहेगी अच्छी तो
पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर चाहे तो किसी को 10 मर्रा भी होगा, 10 मर्रे भी ये काम कर सकता है, कनाल में भी कर सकता है, तो मेरे हिसाब से अपना गुजारा हो जाएगा। यही अपील है कि थोड़ा सा ज़मींदारों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जिस तरह वो दे रहे उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये ज़मींदार खुद कफील हो जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट देता है तभी ज़मींदार को भी इस काम करने में मज़ा आता है। उसको ये यकीन लगता है कि अगर मुझे नुकसान हो जाएगा तो गवर्नमेंट देगा। ये होना चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट इस साल हमारे वो इंश्योरेंस किया है उसने ज़मीन को, चाहे धान में चाहे मकाई में, इस तरह इस हमारे जो हैंडवन है इनको भी होना चाहिए इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर नुकसान भी हो जाएगा तो गवर्नमेंट देगा। गो शौक बहुत मतलब करान मजूर वजूर तो बह आस मे दोप मे ज़मीन कनाल बह कर हैंडवंद अत तो मरब गई कम मे गो शौक मे लगे परस अत 500 कुल 500 हतन मज गई मतलब अच्छा फायदा असल रपी दह मजूर ते पे करें कि रपी दह असल पत गो मे तत पे शौक योस तो कोर मे इंशाल्लाह ज़मीन कनालन अकिस दोन तो माशाअल्लाह माल ते द्रा असल तो रेट ते ठीक तो बहरहाल बहुत अत पे पकान असल पे मगर अत रेट गस रोजन फिक्स रेट गस रोजन फिक्स। नौजवान बह गुजारिश करान अगर ये तम सड़कन पे फेरन मतलब या आवर गर्दी कर अगर पन्न ज़मीन 2 कनाल आसनक मतलब सब्जी कर तिमन पे मतलब मजूर करें कहें आन सोर जान बे तुहस मतलब शुक्रिया करान तुह ज़मींदारन नश वातान तुहद वसात तत सत वातान और मगर माशाअल्लाह ये कत पकान ब्रोह यह गस बे पकन अम खुद ज़्यादा ब्रोह कन तो सन रेट ते बढ़े चूँकि अस ये फायदा। नाज़रीन आखिर पर बात करेंगे पुलवामा के लसवनी इलाके की, जिन्होंने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उनके इलाके में अंदरूनी और बैरूनी सड़कों को मैक्सिमाइज करने के लिए हुकाम की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं। यहाँ देहातों के सड़कों को पुख्ता बनाने का काम जारी है। आपको बता दें कि अवाम ने ANN न्यूज के जरिए इंतजामिया तक अपनी फरियाद पहुंचाई थी, जिसके बाद इलाके में जिला इंतजामिया की जानिब से तामीर और तजदीद के इकदाम उठाए गए। हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के गाँव लुसने में रहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, तो ये दूसरी तरफ से बड़गाम को भी टच करता है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि जब से हमने देखा है कि डेवलपमेंट के हवाले से आजकल जो हम ये माहौल देख रहे हैं कि इंटरनल लिंक्स जो होती हैं इन पे मैग्नेमाइजेशन का काम सारी व जारी हैं, तो हमारे गांव में भी मैग्नेमाइजेशन का काम चल रहा है। तो इस हवाले से हम पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत पहल की है और इसके अलावा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है इसके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सच में जो डेवलपमेंट है वो डोर टू डोर आज आ रही है। गवर्नमेंट की जानिब से वो डोर टू डोर आ रही हैं। हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्लान्स होते हैं, वो अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत ताउन कर रहे हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे इस वक्त के कुछ अहम अपडेट्स। वक्त हुआ चला है आपसे इजाज़त लेने का, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।